थे ना, वो रह गए थे। होंगे ठीक बेटा, है। होंगे, वो भी होंगे। Okay. So we have studied Bell-Coleman cycle. In the Bell-Coleman cycle, there are four components. First component is compressor. Second one is air cooler, then turbine, then refrigerator. Okay. So this compressor consume work and this turbine deliver work. So the work consumed in the compressor is more in comparison to turbine. So the net work which is required for the refrigeration is WC minus WC. And we know the four processes. The first process, 1 to 2, is isentropic compression, then isobaric heat rejection, then isentropic expansion, and last one is isobaric heat absorption. So these are the four processes. Then this is the PV diagram of Bell-Coleman cycle, and this is the TS diagram of Bell-Coleman cycle. Okay. And we have also derived the COP of the Bell-Coleman cycle, and the COP of the Bell-Coleman cycle is depend upon the pressure ratio. Okay, so the COP of the Bell-Coleman cycle is 1 upon R to the power gamma minus 1 upon gamma minus 1. So where R is the pressure ratio. If the pressure ratio is more, COP will be less. After that, we have discussed the actual Bell-Coleman cycle. In the ideal Bell-Coleman cycle, we assume that the processes compression and expansion, there is an isentropic process. But in actual, due to friction, these processes are not isentropic. So suppose this is our ideal Bell-Coleman cycle, 1 to 2, 1 to 2 dash. 1 to 2 dash is a isentropic compression, and 3 to 4 dash is a isentropic expansion. So in the ideal cycle, our processes are isentropic. But in actual, due to friction, there is some irreversibility. And that's why these processes are not isentropic. Isentropic means entropy remains constant. Okay, so what will be the actual cycle? Our actual cycle will be look like this. So our actual cycle is 1, 2, 3, 4. So this is our actual Bell-Coleman cycle. So this process 1 to 2 dash is a isentropic. However, this 1 to 2 is not a isentropic process. So in the process, entropy is increased. Okay, and the 3 to 4 dash is a isentropic process, but in actual, the process is 3 to 4. In this process also, entropy is increased. So you can remember this process, this cycle 1, 2, 3, 4 is not an ideal cycle, it's the actual cycle. Now, how we do the calculation for the actual cycle? So for that, we define the isentropic efficiency of the turbine and compressor. So how we define? So first we will define the isentropic efficiency of the turbine. So for the isentropic efficiency of the turbine is defined by eta T equals to T3 minus T4 divided by T3 minus T4 dash. Okay, so you can also see this is the difference T3 minus T4, and another one is T3 minus T4 dash, and you can see this T3 minus T4 is always less than T3 minus T4 dash. That's why the efficiency cannot be greater than 1 or 100%. If you put the value T3 minus T4 dash in the numerator and divided by T3 minus T4, your efficiency will greater than 100%, which is not possible. So you don't have to remember this formula. You can write by seeing the diagram. T3 minus T4 divided by T3 minus T4 dash. Similarly, we can write the isentropic efficiency for the compressor. Can you tell me? Anyone? Yes? Anyone? Sir, T2 minus T1 over T2 dash minus T1. T2? Yes, what? T2 minus T1?
Yes, sir. T2 minus T1 divided by T2 dash T minus T1. T1. Anyone else? सही बोल रहा है? Yes. Anyone else? Anyone else? Okay. So tell me the difference between T2 minus T1. So T2 is this and T1 is this. So difference is this. And T2 dash minus T1. तो कौन सा बेटा उसमें आएगा डिनोमिनेटर में? If you calculate with this formula, efficiency is greater than 100%. हिमांशु? सर T2 डैश आएगा ऊपर. T2 dash आएगा. So Yes, sir. this is the common mistake. यही वो मिस्टेक है जिसको बच्चे न्यूमेरिकल में करते हैं, क्योंकि you can write cycle like that, actual cycle 1 2 dash 3 4 dash और आइडियल साइकिल 1 2 3 4. तो नंबरिंग कभी भी चेंज हो सकती है, आप डैश किसी में भी लगा सकते हो, बट आपको फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है कि फॉर्मूला गलत ना हो. अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हो तो अगर आपने गलती से यहाँ पर डैश लगा दिया तो फिर आपका आंसर भी गलत हो जाएगा. तो ऑलवेज चेक कि जो डिफरेंस है कौन सा बड़ा आ रहा है. जो डिफरेंस बड़ा होगा वो हमेशा अपॉन बेस में होगा. ओके, क्लियर? ये चीज क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है? Yes, sir. साइकिल में. Yes, sir. Now we have discussed the cycles. So cycle can be open cycle, gas cycle or vapor cycle. Or first we can divide the cycle as power cycle and refrigeration cycle. Okay, so if it is produced power, it's power cycle, and if it is produced refrigeration effect, it is a refrigeration cycle. Now we can further divide these cycles as gas cycle and vapor cycle. What are the gas cycles? The cycles in which the working fluid remain in the gaseous state are known as gaseous cycle, and the cycles in which the working fluid exists in a liquid phase for the part of the cycle and the vapor phase for the another part of the cycle are known as vapor cycle. Okay, so this is the basic difference between the gas cycle and vapor cycle. So what are the examples of vapor cycle? Anyone? What is Sir, the Rankine example? cycle. Rankine cycle. Rankine cycle is a vapor cycle. Okay, and what is the example of gas cycle? Sir, Otto cycle. Otto cycle, diesel cycle, all are gas cycle. Okay, apart from that, Bell-Coleman cycle is also a gas cycle, gas refrigeration cycle. Okay, and these cycles can be further divided as open cycle and closed cycle. Okay, the cycle can be open and closed. If you see, the Otto cycle is open cycle. The mass can enter and leave. Okay, so we will discuss the open Bell-Coleman cycle. Open Bell-Coleman cycle. Okay, so in the open Bell-Coleman cycle, what we don't have the refrigerator. We have only three components: compressor, air cooler, turbine, and the refrigerator is missing. So what will happen in the open Bell-Coleman cycle? Air from the room at state 1 enter into the compressor where isentropic compression is occurred and the pressure and temperature of the air is increased. This air enter into the air cooler where it rejects QH amount of heat and then enter into the turbine where it gets expand and its pressure and temperature will decrease. तो यहाँ पर क्या था, 1 पॉइंट पर जो एयर थी रूम में वो कंप्रेसर के अंदर गई, उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज किया और उसके बाद उसने एयर कूलर में गई जहां उसने अपनी हीट रिजेक्ट करी और उसके बाद फिर से वो टरबाइन में आई जहां टरबाइन में जब एक्सपेंशन हुआ तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ. नाउ the low temperature and low pressure air enter into the room and in the room it will produce the refrigeration effect. So it will directly mix with the air of the room and finally at one point we have the same condition जो हमारे पास पहले से थी. That's why this is a cycle. A cycle is defined as a series of processes such that the final state is identical with the initial state. Okay, so in this open Bell-Coleman cycle, since we are using the refrigerant as a working fluid as a air, so we can directly expand this air into the room. So at this 4 point we have a low temperature air. Low temperature air enter into the room and produce the cooling effect. At one point again we have similar
condition. Okay, so we directly supply the air into the room. But what is the limitation of this open Bell-Coleman cycle? This pressure P, 1 point, so this P4 and P1 are equal. P1 is equal to P4. So this process is also a isobaric heat absorption, like closed Bell-Coleman cycle. Okay, but what is the limitation? This pressure should be equal to 1 atmosphere. Since we are transferring the air inside the room directly, so this pressure cannot be greater than the 1 atmosphere. Okay, so this is the limitation of the open Bell-Coleman cycle. And we know COP depends upon what? What is the formula of COP? Pressure ratio 1 1 upon pressure. upon R to the power gamma minus 1 upon gamma minus 1. So suppose we have to compress this air up to 10 bar, and initially our pressure is 1 bar. So the pressure ratio is R equals to, what is the pressure ratio in this case? Yes, what is the pressure ratio? P2 by P1. P2 by P1. 10. What? This is 10 bar and this is 1 bar. So pressure ratio is 10. So in case the COP will be low. Suppose this is, if it is closed cycle, the initial pressure can be greater than 1 bar. So if it is 2 bar, then our pressure ratio will be 5. 5. 5. So our COP will be more in which case? Closed Bell-Coleman cycle. So this is the limitation of open Bell-Coleman cycle, that the COP of the open Bell-Coleman cycle is lower than the closed Bell-Coleman cycle. Since we cannot increase the state 1 pressure up to, we have to limit, we have a limitation that this pressure must be equal to 1 atmosphere, okay, or 1 bar. Okay, so this is open Bell-Coleman cycle. So here we remove this equipment, which is refrigerator, which produce the refrigeration effect, since we directly send the air into the room. Any doubt? Any doubt? Any doubt in this? No, sir. Okay. Now, so what are the application of air refrigeration cycle? So we are discussing the gas cycle, and in the gas cycle, the working fluid is air. So this cycle is also known as air refrigeration cycle. Okay, we are discussing the Bell-Coleman cycle, and Bell-Coleman cycle is a gas refrigeration cycle. Since the working fluid is air, so we directly say air refrigeration cycle. Okay, so what are the application of air refrigeration cycle? These air refrigeration cycle are used in aircraft, which can be military or commercial. Okay, so in any aircraft, we use air refrigeration cycle for the refrigeration and air conditioning. Apart from that, the coefficient of the performance of the cycle, if we discuss the gas cycle or air cycle, the coefficient of performance, COP, is lower than in comparison to vapor compression cycle. So COP of the gas refrigeration cycle or air refrigeration cycle is always less than in comparison to वेपर कंप्रेशन साइकिल. तो वेपर कंप्रेशन साइकिल से अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनकी सीओपी हमेशा लोअर आएगी. ओके, हाउएवर इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर एयरक्राफ्ट ड्यू टू लो वेट. तो जो वेट होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का वो कम होता है, इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट के लिए सुटेबल हैं इन कंपैरिजन टू वेपर कंप्रेशन साइकिल. वेपर कंप्रेशन साइकिल की सीओपी ज्यादा है भले ही, मगर हम फिर भी क्या यूज करते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज करते हैं, क्योंकि इनका वेट कम होता है एंड एयरक्राफ्ट में जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. इन द एयरक्राफ्ट कॉमन टर्बो कंप्रेसर इज यूज फॉर बोथ इंजन एंड रेफ्रिजरेशन. तो कोई भी एयरक्राफ्ट कैसे रन करता है, वहां पर कंबशन हो रहा होता है फ्यूल का, जिसके लिए हमको एयर चाहिए होती है. तो वहां पर पहले से ही एक टर्बो कंप्रेसर होता है जो एयर को कंप्रेस करता है. तो उसी कंप्रेसर से जो कंप्रेस हो रही है एयर, उसी को हम यूज कर लेते हैं अपने रेफ्रिजरेशन पार्ट के लिए, क्योंकि हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर है, और वो दोनों प्रोसेस के लिए सेम है. जो कंबशन हो रहा है एयरक्राफ्ट में उसके लिए भी एयर चाहिए,
और जो रेफ्रिजरेशन हो रहा है उसके लिए भी एयर चाहिए। बेटा माइक किसका खुला है? ऑफ करेंगे अपना माइक। माइक किसका ओपन है? ओके, सो द सेम compressor is used for the both purposes, for the combustion and for the refrigeration. So एक कंपोनेंट और कम हो गया हमारा, कंप्रेसर हमको अलग से नहीं चाहिए रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए, क्योंकि जो कंप्रेसर लगा हुआ है पहले से एयरक्राफ्ट में वही हमारा पर्पस सॉल्व कर दे रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस ऑफ ओपन साइकिल, अगर हम ओपन साइकिल यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहां पर रेफ्रिजरेटर भी रिमूव हो जा रहा है, तो एक कंपोनेंट और कम हो गया, वेट और ज्यादा रिड्यूस कर गया। Therefore, the COP per unit weight of the system for a given capacity. तो सपोज अगर हमारे पास कैपेसिटी गिवन है, सपोज हमको 10 TR रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है एयरक्राफ्ट के अंदर, 10 TR रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए जो COP आएगी, हम जानते हैं कि जो गैस साइकिल है उसकी हमेशा COP कम होती है इन कंपैरिजन टू वेपर साइकिल, बट इफ यू कैलकुलेट पर यूनिट वेट, जो टोटल वेट अगर उसको कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, तो जो COP होगी गैस साइकिल के लिए वो ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू वेपर साइकिल। तो द COP पर यूनिट वेट ऑफ द सिस्टम फॉर अ गिवन कैपेसिटी इज मोर फॉर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। So this is most suitable for aircraft. Okay. Now let's discuss what is the need of refrigeration in aircraft. We know as we move upward from the earth surface, temperature decrease. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 0.64 डिग्री सेंटीग्रेड विथ पर 100 मीटर एल्टीट्यूड, यानी कि अगर हम 100 मीटर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं तो जो टेम्परेचर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.64 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए। और जो 10,000 to 12,000 मीटर हाइट पर उड़ते हैं तो वहां पर तो पहले से ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। However, still we required refrigeration due to following reasons. तो जो जहां पर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है वहां पर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर पहले से ही बहुत लो है, मगर फिर भी हमको रेफ्रिजरेशन चाहिए होता है, एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्या ऑक्यूपेंट तो जितने बैठे हैं वो सबके सब कुछ ना हीट रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हमको क्या होगा, वहां पर क्या होगा, हीट जनरेट होगी और उसको कंट्रोल करने के लिए हमको रेफ्रिजरेशन चाहिए होगा। कनेक्ट ओके। सेकेंड रीजन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं, बहुत सारे सिग्नल्स की डिवाइसेस होती हैं, जैसे रडार है, डिफरेंट टाइप के मीटर होते हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स दिखा रहे होते हैं। तो वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं और उसको क्या हीट की फॉर्म में डिसिपेट करती हैं इन द इन्वायरमेंट। तो वहां से जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगी हुई हैं, लाइटिंग लगी हुई है ना, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं, तो ये सारे भी मिलकर क्या कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, तो जिसको भी हमको बैलेंस करना है। अगला जो रीजन है वो है एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन बाय एयर। जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ता है, तो जो एयर होती है उसके साथ वहां पर फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस है, जो बॉडी है एयरक्राफ्ट की, वहां पर हीट जनरेशन हो रही है और वो फिर दोबारा से एयरक्राफ्ट के अंदर आ रही है, तो उसको भी हमको बैलेंस करना है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन, अगर हम अर्थ की बात करें तो सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप किसी कार को किसी पार्किंग पे छोड़ दे तो कितना ज्यादा हीटअप हो जाती है अंदर से। तो और जो एयरक्राफ्ट है वो तो आसमान में क्लाउड से भी ऊपर उड़ रहा है, तो यानी कि वहां पर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी ड्यू टू सोलर रेडिएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, the another reason is ramming of air. This is very important, ramming of air, and I will explain this topic in next slide. So these are the reasons, since the ambient condition, जो ambient है, the temperature is too low, फिर भी हमको रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि इतने सारे जो रीजन हैं इनकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, एंड द लास्ट वन इज रैमिंग ऑफ एयर। Usually aircraft while cruising move at an altitude of 8,000 to 12,000 meters.
आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो जनरली इस हाइट पे उड़ते हैं 8,000 से 12,000 के मीटर की ऊंचाई पर। एंड दिस कंडीशन द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज फार डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड कंडीशन। So at the ground, the pressure is 1 atmospheric and temperature is approximately 25 to 26 degree centigrade. But when we move upward, temperature will decrease. We have already discussed when we move 100 meters, the temperature will decrease 0.64 degree centigrade. Okay, but when we move upward, pressure will also decrease. प्रेशर आपने भी सुना होगा, जो पहाड़ों पे होते हैं, चोटी पे होती है, वहां पर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है वहां पर। तो जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं हम, तो वहां पर भी प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज करता है। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 मीटर द प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 बार एंड द टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम 10,000 की हाइट पर होंगे तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो होगा 0.2 बार। तभी आपने देखा होगा कि जैसे एयरक्राफ्ट का कभी अगर एक्सीडेंट हो गया, दरवाजा खुल गया, तो जितने पैसेंजर सब निकल के बाहर से जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने मेंटेन किया है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो कंफर्टेबल होगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो वहां पर आपको प्रेशराइजेशन करने की भी जरूरत है। और अगर आप ओपन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज करते हैं, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज करते हैं, तो वो काम क्या करती है, वो डायरेक्टली एयर सप्लाई कर रही है केबिन में जहां पर रेफ्रिजरेशन चाहिए, और साथ साथ प्रेशर भी मेंटेन कर दे रही है। ओके, जो आउटर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो है। तभी आपने किसी मूवीज में देखा होगा कि अगर एक्सीडेंट होता है या कभी डोर खुल जाता है तो सीधे जो है जो भी पैसेंजर्स हैं वो सारा सामान निकल के एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर बहुत लो है इन कंपेरिजन टू एयरक्राफ्ट प्रेशर। तो अप्रोक्सीमेटली 1/5 टाइम है आउटसाइड का प्रेशर। ओके, so at such altitude the air quality is very thin and the amount of oxygen is not sufficient। तो वहां पर क्या है, डेंसिटी भी कम हो गई है। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी है वो डील करने के लिए किसके लिए बनी है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार प्रेशर पे हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो किस पे करती है? 1 बार प्रेशर पे। अगर वहां पर अगर लो प्रेशर पे अगर हम चले जाएंगे तो हमारी आंखें खुद ही बाहर निकल जाएंगी, हमारी नाक से खून निकलने लगेगा, हमारे कान से खून निकलने लगेगा। ओके, सो हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करने के लिए। अब ये रैम इफेक्ट क्या होता है? अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो ये एयर है, जो 0.2 बार पे एयर है, इसको आप डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं भेज सकते। इसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप इस एयर को डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के अंदर भेजते तो रेफ्रिजरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये एयर अपने आप ही रेफ्रिजरेशन कर लेती। बट इसका जो प्रेशर है वो 0.2 बार है, तो इस एयर को आप एयरक्राफ्ट के अंदर भेज ही नहीं सकते। तो फर्स्ट आपको इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तभी वो अंदर जाएगी। ओके, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रैम इफेक्ट। तो जब ये जो एयर है एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर एक रैम इफेक्ट नाम से कोई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है वो कंप्रेस हो जाती है। ओके, ये एयर कंप्रेस हो जाती है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ c meter per second is the aircraft velocity. If aircraft is moving and the velocity is c meter per second, okay, then the velocity of air relative to the aircraft will c meter per second. Okay, the velocity of the air is zero. Velocity of the air is zero. Air is stagnant है, but relative to the aircraft, the velocity of the air is c meter per second. सपोज ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सपोज आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और कोई ट्रेन मूव कर रही है c मीटर पर सेकंड से। ओके, आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप कहोगे कि जो ट्रेन की स्पीड है वो c मीटर पर सेकंड है। बट मगर अगर आप ट्रेन के रिलेटिव देखोगे, अगर आप यहाँ पर होगे तो आप कहोगे कि ये जो यहाँ पर पर्सन खड़ा है इसकी वेलोसिटी कितनी है? c मीटर पर सेकंड। ओके, सो for the calculation we just assume that aircraft is stationary and air is moving. हमने क्या मान लिया कि जो एयरक्राफ्ट है वो हवा में स्टेबल है और जो एयर है वो मूव कर रही है c की स्पीड से। ओके, so what we have defined, if the c meter per second is the aircraft velocity, then the velocity of air relative to aircraft will c meter per second. This is clear or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
Then, therefore, ambient air has kinetic energy relative to aircraft. The velocity of the air relative to the aircraft, c meter per second. So air has the kinetic energy relative to aircraft. और kinetic energy कैसे define करते हैं? Half mv square. half mv square, Yes. sir. Okay. So the kinetic velocity is half mv square. So air has kinetic energy with respect to or relative to aircraft. Okay. So when air enter into the aircraft, it will become stagnant. When air enters into the aircraft, it will become stagnant and its velocity decrease to zero. The conversion of high kinetic energy of ambient air relative to aircraft into enthalpy is known as रैम इफेक्ट. इसी को हम क्या बोलते हैं? रैम इफेक्ट. ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. सपोज ये ट्रेन थी, यहां पर आप खड़े हो. Train is moving with the velocity of 60 meter per second. Okay. अब सपोज आप क्या कर रहे हो? आप ये मान रहे हो, आप रिलेटिव टू द एयर ट्रेन देख रहे हो. अगर एक पर्सन यहां पर है तो वो क्या देखेगा कि कौन मूव कर रहा है. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. अकॉर्डिंग टू बी कौन मूव कर रहा है 60 की स्पीड से? Sir, ए मूव कर रहा है. Am I correct? Yes, sir. So velocity of c with respect to train is 60 meter per second. Okay. Now, if this a person enters into the train, what is his speed now? 0 with respect to train. 0. Yes, sir. Okay. Similarly, we have assumed that the aircraft is stationary. This is the aircraft and this is stationary, and the air is moving with the velocity of c. When this air enter into this aircraft, it will become stagnant. The velocity will become 0 with respect to aircraft. This is clear or not? Yes, sir. But A section, B section. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what we have assumed that the velocity of the aircraft is c, and air is stagnant. But what is the velocity of air with respect to the aircraft? c, and the velocity of aircraft with respect to aircraft is 0. Okay. So when this air enter into the aircraft, its relative velocity with respect to aircraft becomes 0. So it means this kinetic energy, जो kinetic energy थी एयर में, जब वो एयरक्राफ्ट के अंदर आई तो वो 0 हो गई. तो यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो वो कहाँ गई? वो कन्वर्ट हो गई एंथैल्पी में. एंड दिस इज नोन एज रैम इफेक्ट. द कन्वर्जन ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्बिएंट एयर relative to aircraft into enthalpy is known as RAM effect. Clear? This point is clear? Yes, sir. If you have any doubt, you can ask. ठीक है? Otherwise, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. So, due to RAM effect, the pressure of the ambient air increase and initial compression of air is obtained. The work required for this RAM effect or this initial compression is taken by engine. Okay, तो ये जो इंजन है वो एयर को अंदर को सक कर रहा है, तो वो जो भी वर्क ऑब्टेन हो रहा है रैम कंप्रेशन के लिए वो इंजन से ले रहा है और उसको हमको अपनी साइकिल में कैलकुलेट नहीं करना. ओके, सो वी हैव डिस्कस द डिफरेंट रीजन एंड वी हैव अंडरस्टैंड द रैम इफेक्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट साइकिल्स in air refrigeration system. So there are different air refrigeration system. Air refrigeration system generally used in aircraft, and there are several air refrigeration systems. The first system
a simple air refrigeration system. Okay, and this can be without evaporative cooling and with evaporative cooling. So this is our first system, simple air refrigeration system, and it can be without evaporative cooling and with evaporative cooling. The next cycle is bootstrap air refrigeration cycle, and this can be without evaporative cooling and with evaporative cooling. The another one is regenerative air refrigeration cycle, and the last one is reduced air refrigeration system. So we have to study all these cycles in this unit, and each cycle has its own numerical. So let's start our discussion with a simple air refrigeration system. So this is the schematic diagram of simple air refrigeration system. There are a number of components. The first component is jet compressor. The second component is air cooler, and the third component is cooling turbine. And there is a fan, auxiliary fan, which is run by turbine. So let's first discuss the Bell-Coleman cycle. In the Bell-Coleman cycle, the first component is compressor. So the first component is compressor, like this. Second component is air cooler. Third component is turbine. And the fourth component is refrigerator. Okay. So the process 1 to 2 is isentropic compression. Okay. The second process 2 to 3 is heat rejection in the air cooler. So the QC amount will be rejected, and this is air cooler. And the next component is turbine, where the isentropic expansion occurs, and in the fourth part there is a refrigerator. In case of open cycle, the refrigerator is removed and air is directly sent to the cabin. So this is also a open cycle. Since we are transferring the air directly to the cabin, where the refrigeration is required. The advantage of this, we do not have to maintain the pressure. It will automatically maintain the pressure in the cabin. तो जो एयरक्राफ्ट है वहां पर केबिन में हमको प्रेशर भी मेंटेन करना है, प्रेशराइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज वहां पर आदमी कैसे बैठेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको मेंटेन करना है. So we will supply the air from the cooling turbine atmospheric pressure, and it will maintain the pressure of the cabin. So this is a open cycle. So what are the components? First one is compressor, air cooler, turbine. Similar to the Bell-Coleman cycle. जैसे Bell-Coleman cycle में थे वैसे ही हैं, बस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से है. Okay, so first you have to observe that the cycle will start from 2 points, 2, 3, 4, 5. Where is the first point? पहला पॉइंट कहां पर है? सर फैन के पास. कहां के पास? फैन के पास. यहाँ 1 पॉइंट. Sir, ambient. Where is the first point? Sir, ambient. Yes, Sir, ambient, sir. ambient. So first we are doing the refrigeration in the aircraft. Okay, so the ambient air first enter into the aircraft, and this is known as ram effect. There is an initial compression. When the ambient air enter into the aircraft, there is an initial compression, and this compression is the isentropic compression, which is known as ram effect. So 1 to 2 is a ram effect or isentropic compression. Okay, so now at point 2, after the ram compression, we have the ram air, which is sent to the jet compressor, and this is the common compressor which is used for the combustion and the refrigeration process. So it will compress the ram air. जो initial compression हुआ है वो ram air का compression हुआ है, और ये air हम किसमें भेज रहे हैं? jet compressor. Now this air enter into the jet compression, where isentropic compression is occur.
So after the compression, the pressure will increase and temperature will also increase. And some of the air is sent to the compressed air sent to the engine for the combustion process. And some part of the air which is compressed sent to the air cooler. And in the air cooler, it will reject its heat at constant pressure. So first process, 2 to 3 process is isentropic compression, and 3 to 4 process is the isobaric heat rejection, similar to the Bell-Coleman cycle. And when the heat is removed at 4 points, the air is sent to the cooling turbine where it get expand isentropically. जहां पर क्या हो रहा है, isentropic expansion होता है. Now the air is expand. Due to expansion, its pressure and temperature will decrease, and now this low temperature air sent to the cabin for the refrigeration. Okay. In the Bell-Coleman cycle, the work produced by the turbine is sent to the compressor. But in this case, the work produced by the turbine is used to run a fan. तो जितना भी वर्क ये टर्बाइन जितना भी वर्क प्रोड्यूस कर रही है, उससे एक फैन रन हो रहा है. और ये फैन क्या कर रहा है, जो ये रैम एयर है यहाँ पर, इनिशियली हमारे पास एम्बिएंट में एयर थी, वो उसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, वो 2 पॉइंट पर हमको रैम एयर मिली, और रैम एयर का प्रेशर और टेम्परेचर हाई है इन कंपैरिजन टू 1. बट आफ्टर द कंप्रेशन द प्रेशर एंड टेम्परेचर विल फर्दर इंक्रीज. तो जो प्रेशर है 3 पॉइंट पर वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 2, और 3 पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है किससे, इन कंपैरिजन टू 2. So this fan bleeds some air from the 2 point and pass it through the air cooler. So this air pass through the air cooler and it is responsible for the heat rejection from the high pressure and high temperature air. तो जब ये एयर यहाँ से फ्लो होते हुए जाती है, तो ये जो ये यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आ रही है, इसको वो कूल करती है. तो यहाँ पे जितनी भी हीट रिमूव हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जो एयर यहाँ से पास हो रही है. और ये एयर को कौन सक कर रहा है, यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है जो किससे रन कर रहा है, टरबाइन से रन कर रहा है, और जिसकी मदद से ये इसको एयर को ड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पर कूलिंग, यहाँ पर हीट रिमूव हो रही है. सो लेट्स फर्स्ट सी द टीएस डायग्राम, देन अगेन वी विल डिस्कस द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, देन इट विल मोर क्लियर टू यू. सो दिस इज द वर्किंग. सो फर्स्ट प्रोसेस इज द रैम इफेक्ट. सो फर्स्ट प्रोसेस इज रैम इफेक्ट. So there are different pressures. First one is ambient pressure, then ram pressure, then air cooler pressure, and the cabin pressure. So initially there is a ram compression. जब air enter कर रही है aircraft में, तो वहां पर ram effect की वजह से क्या हो रहा है, initial compression हो रहा है, and this compression is the isentropic compression. Okay. The second process, air will enter into the jet compressor. And in the jet compressor, there will be a isentropic compression. So 2 to 3 is isentropic compression. Then air enter into the air cooler where it reject its heat at constant pressure. So it will reject its heat at constant pressure 3 to 4. Now to the turbine where it gets expand and its pressure will decrease up to cabin pressure like this, 4 to 5 isentropic expansion. And the last one, the refrigeration effect will produce in the cabin, 5 to 6. Okay. So this is the TS diagram of the simple air refrigeration system. So 1 to 2, ambient condition. Ambient condition, it may be 0.2 or minus 50 degrees centigrade, like this, ambient condition. So when this ambient air enter into the aircraft, its kinetic energy relative to the aircraft convert into the enthalpy, and due to which pressure will increase. So pressure will increase at 2 point. 1 to 2 is it's an initial compression, and this is known as ram effect. And 2 to 3 is isentropic compression in the jet compression. 3 to 4 heat rejection in the air cooler, and 4 to 5 isentropic expansion in the turbine, and 5 to 6 refrigeration effect produced in the cabin. Okay. Now let's again see the schematic diagram. So initially there is an initial compression due to ram effect, and point 2 we have ram air. This ram air transferred to the jet compressor where isentropic compression will occur, 2 to 3. Now
this high pressure and high temperature air enter into the air cooler where it gets cooled. It rejects its heat at constant pressure. Then it enters into the turbine where it further expands up to cabin pressure. Okay, and we have low pressure, low temperature air in the cabin which produces the refrigeration. The work produced by the turbine is utilized to run the fan, and this fan draw the ram air through the air cooler, which is responsible for the heat rejection in air cooler. Now, any problem in this? Any problem? No, sir. Anyone else? Section A, section B? Yes? Ayush Chauhan? Abhi Tyagi? Abhi Tyagi? No, sir. Abhinav Chauhan? Abhishek Beer? Yes, sir. Abhishek Kumar? Yes, sir. Aman Gupta? Yes, sir. अर्पिता? Yes, sir. आयुष? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सबको क्लास में हो, सब मगर प्रॉब्लम कोई नहीं है. ओके. तो जो भी वर्किंग है यहाँ पर एक्सप्लेन करिए. इनिशियली एयर गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू द रैमिंग इफेक्ट. ओके. After that, ram air enter into the main compressor where it gets compressed. This compressed air transferred to the engine, and part of the compressed air bleed to the air cooler for cooling purpose. Apart from that, ram air is also bleed to the air cooler, and in the air cooler, high pressure air gets cooled by exchanging the heat with ram air. तो ये मैंने already explain कर दिया है. After that, high pressure cooled air enter into the cooling turbine where its pressure and temperature is decreased. The low temperature and low pressure air directly supplied to the cabin for refrigeration. This is important. The work generated by the cooling turbine is used to drive a fan which draw the ram air through air. So now we have seen the TS diagram of this cycle. Now we will try to calculate the COP of the simple air refrigeration system. Okay. So the first step is ram compression or ram effect, where the isentropic compression of ambient air is occurred. So let's first understand the process. So we can write from the steady flow energy equation for the ambient air and this between the 2.1 and 2. So initially we have ambient air, and suppose this is our aircraft. Okay, which is moving with the velocity of c, and air is stagnant. But for the calculation purpose, we assume that this aircraft is stagnant and air is moving with the velocity of c. Okay, so we apply the steady flow energy equation. So at one point, the enthalpy of the air is H1, and in this air, some kinetic energy is there. So we write for the per unit mass, so we can write c square by 2. This is the kinetic energy part. So this is at this condition. When this air enters into the aircraft, this kinetic energy becomes 0 because the velocity of the air with respect to aircraft becomes 0 when it enters into the aircraft. Okay, so here there is no velocity term because the velocity is become 0. So we can write H2 equals to H1 plus c square by 2. This is clear or not? Yes, sir. This is clear? Yes, sir. Okay. Now we know for the air or ideal gas, we can write enthalpy as CPP. So we will write H2 as Cp T2, H1 as Cp T1. Okay. Now divide this equation with Cp. You will get T2 equals to T1 plus C square by 2 Cp. Okay. Correct. Now we will divide this equation with
T1. So if we divide this equation with T1, we will get T2 by T1 equals to 1 plus C square divided by 2 CP T1. Correct? Yes, sir. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Okay. Now, No, sir. T2 by T1 equals to 1 plus C square 2 CP T1. यहाँ तक हमको मिल गया. Now, we know the value of CP is equal to gamma R divided by gamma minus 1. We have two relations, gamma equals to CP by CB. Apart from that, we have another relation, CP minus CB equals to R. So by solving these two equations, we can also get this Cp equals to gamma R divided by gamma minus 1. Okay, so now let's put the value of Cp in this equation. So if we put the value of Cp in this equation, we have gamma R here and this gamma minus 1 कहाँ चले जाएगा? Numerator में. Okay, so we will get T2 by T1 equals to 1 plus gamma minus 1, ये जो gamma minus 1 था यहाँ डिवाइड किया तो ये ऊपर आ गया, C square divided by 2 gamma R T1. This is clear? Yes, sir. Okay. Now, this term gamma R T1, so under root gamma R T1 is known as acoustic velocity. So this acoustic velocity is known as A. So A equals to under root gamma R T1. So gamma R T1 की जो वैल्यू होती है अगर अंडर रूट लगाएं तो वो होती है A के इक्वल. So if we replace this gamma R T1 with A, so we can write, so this is A equals to under root gamma R T1. So the gamma R T1 will be equal to A square. So we will put the value, we will get T2 by T1 equals to 1 plus gamma minus 1 C square divided by 2A square. Okay, any problem? No, sir. Okay. Now, we know Mach number M is equal to C by A. So we will replace C square by A square. We can write it as T2 by T1 equals to 1 plus gamma minus 1 M square by 2. So to calculate the relation between T2 by T1, we have different formulas. We have different formulas to calculate the relation between T2 by T1. Why we are doing this derivation? Because in the numerical, based upon the given data, we have to use this formula. जो भी डेटा मिलेगा हमको न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए, अगर जो भी ये हमारे पास इतने रिलेशंस हैं, इनको यूज करके हम यहाँ पर T2 by T1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो फाइनली वी हैव T2 by T1 equals to 1 plus gamma minus 1 M square by 2, where M is Mach number. What is C? What is C? What is C? What is C? Sir, velocity. Velocity of what? Aircraft. Velocity of Aircraft. aircraft. Suppose aircraft is moving in some medium, so the velocity of the aircraft in that medium is C, and the velocity of the sound in that medium is A. Okay, and if the ratio is equal to 1, this is known as sonic velocity. Aircraft is moving with the sonic velocity. If the velocity of the aircraft is lower than the velocity of sound, then we know this is known as subsonic velocity. And the aircraft is moving with the higher velocity than the velocity of sound, then the aircraft is moving with a supersonic velocity. Okay, so we have different type of aircraft. Okay, so based upon the numerical, the given data, we have to use this formula. Can you calculate the T2 by T1 with some another formula? Do you have some another formula? Since the process 1 to 2 is isentropic compression, do you have any another relation? Yes, sir. What relation?
T2 by T1 equals to गामा की पावर गामा माइनस आर की पावर गामा -1 ओवर गामा. P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma. So we can also write T2 by T1 equals to P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma. So we have this another relation. So based upon the given data, we can use this formula. Okay. Now, the next process, so we have done the thermodynamic analysis of 1 to 2 process. Next process is 2 to 3, isentropic compression. Second process is isentropic compression. So in the isentropic compression, we have a relation T3 by T2. T3 by T2 is equal to P3 by P2 to the power gamma minus 1 upon gamma. We have already explained. We have also already seen this in Bell-Coleman cycle. Okay. And what is the required compression work is WC equals to m dot Cp T3 minus T2. Okay. So what is the work required for the compression? MCP T3 minus T2. And what is m dot? M dot is mass flow rate in the refrigeration cycle. Now, the next process is air cooler. In the air cooler, heat is rejected. This process is the isobaric. So P3 is equal to P4. And the amount of heat rejected in the air cooler is QC equals to m dot Cp T3 minus T4. Similarly, in the turbine, the work produced by the turbine is WT equals to m dot Cp T4 minus T5. Okay. And the refrigeration effect produced in this process, MCP T6 minus T5. So this is the refrigeration effect. Can you tell me what is the value of COP? What will be the COP? What is COP? How we define COP? How we define COP? Yes? Sir, cooling effect over desired work. Refrigeration effect upon desired work. Okay. So what is the refrigeration effect here? Sir, Q naught. Q naught. And the value of Q naught is equal to m dot Cp T6 minus T5. And what is the work required? What is the work required? Sir, MCP T3 minus T2. T3 minus T2. So it means WT. We will not minus WT here. यहाँ पर हम WT से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि WT का जो वर्क था वो किस में यूज हो रहा था? फैन को रन करने में यूज हो रहा था. We are not supplying the turbine work to the compressor. So the COP will be Q naught by WC and it will be equal to MCP T6 minus T5 divided by MCP T3 minus T2. Okay. Clear? Yes, sir. Okay. So now let's discuss the actual simple air refrigeration cycle. So we have discussed the simple air refrigeration cycle. Now we are going to discuss actual simple air refrigeration cycle. So we know in the ideal cycle, the compression process is isentropic, but in actual process, the processes are not isentropic. So our process, the ideal cycle is the first process, the ram compression or ram effect is 1 to 2 dash, but in actual it is 1 to 2. Similarly, in the ideal cycle, our compression is 2 dash to 3 dash, isentropic compression, but in actual our compression is 2 to 3. Okay, and it is also not a isentropic process. If we draw the isentropic process from point 2, it will be look like this. But this is also not a isentropic process. Then 3 to 4 is heat rejection in the air cooler. Then isentropic expansion. So if it is not isentropic expansion, it will be like this. So this may be 5 dash or this is 5. And our next process 5 to 6 is refrigeration effect. So we will discuss this actual cycle in detail in our next lecture. Okay. So if you have any doubt in the today's lecture, you can ask. Any doubt? No, sir. Yes. सर हमारा जो 1 से 2 कंप्रेशन होगा सर, इसके लिए कोई डिवाइस चाहिएगी या फिर ऐसे ही हो जाएगा? बेटा, जो डिफ्यूजर होता है ना, जो डिफ्यूजर होता है वो इनिशियली जो एयर होती
होती है बाहर से उसको लेके आता है अंदर, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वहां पर भी वर्क हो रहा है, बट वो वर्क कहाँ से जा रहा है, वो इंजन से जा रहा है। आपको उसको रेफ्रिजरेशन साइकिल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेंशन है अलग से कि आप रैम इफेक्ट को भी कंसिडर करेंगे, तो जो वर्क रिक्वायर्ड है यहाँ पर, जहां पर आप WC ले रहे हैं, वहां पर आपको रैम इफेक्ट का भी कंप्रेशन लेना पड़ेगा, है ना, क्लियर? Yes, sir. Okay. So this is all for this lecture. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave the class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.